Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं देश के जाने माने वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Key domestic share markets rise around 4% during the holiday-shortened business week ended yesterday. Sensex reclaims the 57,800 mark. Nifty closes near 17,300 points. Asian and US stock markets extend gains, and Brent crude oil prices climb above $107 per barrel level. घरेलू शेयर बाजार साप्ताहिक आधार पर लगभग 4% बढ़त में रहे। सेंसेक्स 57,800 के स्तर पर फिर पहुंचा। निफ्टी 17,300 के नजदीक बंद हुआ। एशिया और अमेरिका के शेयर बाजारों में भी दिखी तेजी और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $107 प्रति बैरल से ऊपर पहुंचा। घरेलू शेयर बाजार में साप्ताहिक आधार पर बीते सप्ताह अच्छी खासी लिवाली की गई। त्योहारों के कारण हालांकि इस सप्ताह 4 सत्रों में ही कारोबार हुआ, लेकिन अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में लगभग 4% की तेजी देखने को मिले। उधर दुनिया भर के शेयर बाजारों में भी लिवाली की गई। घरेलू बाजार में प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 57,800 से ऊपर पहुंच गया। निफ्टी 17,300 के ऊपर आकर बंद हुआ। रूस और यूक्रेन के बीच समझौता होने की संभावनाओं के मद्देनजर निवेशकों में उत्साह दिखा। इसके अलावा अमेरिका में ब्याज दर में बढ़ोतरी और चीन में आर्थिक संकट की चिंताएं घटने से वैश्विक शेयर बाजारों में भी खरीदारी की गई। कल बीते कारोबारी सप्ताह में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 2,314 अंक यानी 4.16% की बढ़त लेकर 57,864 पर पहुंच गया। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 657 अंक यानी 3.95% बढ़कर 17,287 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की लिवाली भी की गई, लेकिन इनका प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में थोड़ा सा कमजोर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 2.1% की वृद्धि हुई। स्मॉल कैप इंडेक्स 2.08% ऊपर आकर बंद हुआ। पुनीत जी, बाजार में बीते कारोबारी सत्र पर कैसी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? क्या सब प्रमुख कारक रहे बाजार की तेजी के पीछे? तो मनोज जी, हमने देखा कि पिछले सत्र में यानी पिछले सेशन में और उससे पहले भी पूरे सप्ताह बाजारों में अच्छी तेजी थी, अच्छी रिबाउंड था। और इससे पिछले सप्ताह भी इनफैक्ट मार्केट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही थी। 2% पिछले सप्ताह सेंसेक्स में हमने बढ़त देखी और इस सप्ताह हमने 4% यानी 6% 2 सप्ताह में रिबाउंड देखा। ये आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि बाजार में तेजी थी, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये पिछले 4 सप्ताह में जो उससे पहले जो बाजार गिरा, करीब 7.5% बाजार में गिरावट आई थी 4 सप्ताह में, उसका रीबाउंड था या उसको रिकवर करा मार्केट्स ने वहां पर। तो मैं कुल मिलाकर ये कहूंगा कि बाजारों में कुछ अंडरलाइन स्ट्रेंथ है, लेकिन स्टैंडअलोन में ये नहीं हम कह सकते कि जो चिंताएं हैं जिस वजह से बाजारों में कमजोरियां देखी, वो चिंताएं दूर हो गई हैं। चाहे इन्फ्लेशन की हो, चाहे इंटरेस्ट रेट्स की हो, वो चिंताएं भी बनी हुई हैं। एक बड़ा बदलाव हमने इस सप्ताह में देखा और वो मेरे ख्याल से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। वो है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत में पिछले करीब 6 महीने से काफी बड़े पैमाने पर सेलिंग कर रहे थे, वो उन्होंने कुछ ट्रेंड रिवर्सल हुआ है और पिछले 2 दिन में हमने देखा कि कुछ बाइंग एफआईआईज के द्वारा की गई, जिसकी वजह से बाजारों में रिबाउंड आया। तो कुल मिलाकर बाजार का ये हालात है और मुझे लगता है कि आने वाले जो कुछ और दिन हैं वो वॉलेटाइल रहेंगे amid market activity. Puneet, in the afternoon's program also on Money Matters, I had asked you about the quarter percentage hike in the interest rate by the Fed Reserve.
that has had an impact on the buying interest in our market or not. So it's too early to tell right now, according to you. What is the US Fed strategy right now on its $9 trillion balance sheet against which they were providing loans to its banks? Are they planning to raise interest rates incrementally? And what is the impact likely to be on FII and FPI movements in our market? So, Arjun, with respect to US Fed, there are 2 points that we need to consider. One is the interest rates, and second is the liquidity or the addition to money supply that the Fed has been making. So, Fed has stopped making any fresh money supply into the market. That is one reason. Secondly, they will probably reduce the balance sheet from $9 trillion to progressively to probably $6 or $7 trillion. So I think that liquidity reduction is still to come. Going forward, I think US Fed will continue to raise interest rates. The chairman said that he expects the US economy to remain strong and to grow quite strongly. And therefore, my own estimate is that US Fed will continue to raise rates. So on both these counts, interest rates as well as liquidity reduction, the US Fed will go forward. Of course, it means that FIIs will not be very big buyers in emerging markets, and definitely not in India. In fact, there have been sellers in India. To my mind, they are buying back a little bit wherever value has emerged, but we cannot expect very large-scale FII buying, at least for the next few months. How important is a rule of 20 when the FIIs and the FPIs consider buying into a market selectively, as you said, the price-to-earnings ratio of our markets and the inflation combined? See, valuations are very important because they tend to go to markets which are obviously cheaper in terms of valuation. But India market has always had a premium. So even today, if we look at the PE multiple, in India the PE multiple is still 21, 22. It is less than what it was a few months back. Of course, from 28 we are down to 22. But my own sense is that, but we are still way more expensive than other emerging markets, mostly which are at 15, 16 PE multiples. But India has always commanded a premium, and I think that premium will continue. So the FII buying will more determined by global factors such as interest rates, inflation particularly, rather than valuation standalone in the Indian market. I think they will pay a premium to be here. Well, VIX India is right now at 23. What's a likely scenario next week when the market opens? Is going to be a break now of 3 days, including today being Holy Saturday, Sunday, and when the market reopens on Monday? So the VIX that we are talking about, the Volatility Index, typically is also known as a fear index, or represents the volatility in the markets. It was about 29 last week. Now from 29 we are down to 23, which means that investors are less fearful, at least at present. But my own sense is that volatility will remain a part and parcel of this market. So my own guess is that what VIX will remain in 23, 24, maybe it will go up a little bit. But I guess VIX will remain pretty high right now. Average VIX that we have seen over the past 1 year was about 15, 16. So right now, yes, volatility is higher and expected volatility is going to be more. पुनीत जी, अभी चर्चा के दौरान आपने भारत और भारतीय पूंजी बाजार के लिए एक शब्दावली का उपयोग किया कि प्रीमियम बना रहेगा भारत और भारतीय शेयर बाजार। यहां पर हम ये समझना चाहेंगे आम श्रोताओं के नजरिए से, आम जो हमारे भारतीय श्रोता हैं उनके दृष्टि से, कि विदेशी जो निवेशक हैं, FIIs हों या FPIs हों, उनके लिए ये जो प्रीमियम शब्दावली है या ये जो देखने की दृष्टि है वह क्या दर्शाती और क्या वो कारक हैं जिनकी वजह से भारत बना हुआ है और प्रीमियम, और आने वाले दिनों में भी यहाँ के बाजार पर उनकी निगाह बनी रहेगी? बिल्कुल मनोज जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि क्यों FIIs भारत के बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा वैल्यूएशन को भी वो एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, खासतौर से भारत, दो बहुत बड़ी फायदे हैं भारत के बाजार में। एक तो बहुत बड़ा बाजार है, हमारी जो इकोनॉमी है $3 ट्रिलियन की है, GDP जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी $3 ट्रिलियन से ऊपर है। तो भारत का बाजार बहुत बड़ा, और विश्व के जो बड़े बाजार है उसमें वो उसकी शुमार होता है। सेकंड बात यह है कि जो भारत के अंदर ग्रोथ जो है इकोनॉमी वो बहुत अच्छी है। एक $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी में इतनी फास्ट 8-9% ग्रोथ एनुअल वो कहीं और नहीं मिलती है FIIs को। तो इसीलिए वो ये मानते हैं कि यहाँ पर अगर हमें थोड़ा प्रीमियम देना पड़े, यानी PE मल्टीपल जो है वो भारत में अगर 20-22 का भी है तो उसको वो अच्छा मानते हैं, अट्रैक्टिव मानते हैं।
और दूसरे बाजारों में वो 15-16 के पीई मल्टीपल पे भी इन्वेस्ट नहीं करते। तो इसलिए वो जो प्रीमियम है वो देने को तैयार है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आने वाले समय में जो ग्रोथ है उससे उनको फायदा होगा। Puneet, what's the weekly F&O expiry telling you? That was yesterday. That's also when the cash market closed with a rise of 1,047 points. So you have FIIs, FPIs hedging their position also in the options market. They straddle their positions by put and call. How do you expect the small investor to counter, to enter the market or to exit the market? So, see, the futures market, in fact, has become very active lately. Volumes have really gone up in last 1 year. A lot of people are participating in the options market. It is good and bad both, because options, of course, provide liquidity to investors, large investors. They feel encouraged to put in more money in such markets. But options are also very speculative. So small investors, if usually they trade in options, what we have seen is they lose a lot of money. So I would advise small investors, retail investors, not to participate in options market, because it is something that they cannot easily make money on. Having said that, of course, options can be used for hedging the risk. It is meant for savvy investors, and therefore I said that institutional players are more suitable for that market. However, if you look at the data in the futures option market, it is suggesting that there has been a lot of short covering in the market. The people who had sold earlier have bought back some of those shares, and that's why the markets were up a little bit. It also means that maybe we have seen a bottom in the market in the short term. Maybe for the next few weeks, I think the markets will remain stable or around the current levels, because that short covering means that large investors who had sold earlier have now covered their positions and may not be short selling in the immediate future at least. पुनीत जी, हम आपका ध्यान जो यूरोप में भू राजनीतिक तनाव देखने को मिला, जो संकट उत्पन्न हुआ, उससे उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों की ओर ले चलना चाहेंगे। हालांकि ऐसे आसार दिख रहे हैं कि दोनों पक्षों के बीच में अब समझौता हो जाए, लेकिन तात्कालिक आधार पर और दीर्घकालीन दोनों स्तरों पर देखा जाए तो इसके क्या आयाम निकल सकते और भारतीय अर्थव्यवस्था पर, साथ ही विश्व अर्थव्यवस्था पर कैसे प्रभाव पड़ते नजर आ रहे हैं आपको? मनोज जी, जो आपने बात कही, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्या जो यूरोप में वॉर हो रही है रशिया और यूक्रेन के बीच, उसके पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी पे क्या असर होगा। एक बात तो साफ है कि आने वाले समय में जो ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते थे इकोनॉमी की, उसको बहुत बड़ा झटका या धक्का लगने वाला है, क्योंकि कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होता है या सप्लाई में डिस्ट्रप्शन होता है, उसका सीधा असर हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन पर हो रहा है, और बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, साथ में शॉर्टेजेस भी हो रही है। तो क्लियरली जो ग्लोबलाइजेशन का जो फायदा था कि कॉस्ट कम हो जाती थी, इन्फ्लेशन कम होता था, वो अब कुछ हद तक वो फायदे कम हो रहे हैं। अब मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ग्लोबलाइजेशन का असर कम होगा और जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसका फायदा होगा कंपनीज को या कंट्रीज को, आप कह सकते हैं। भारत के लिए एक और फायदा हो सकता है कि चाइना +1 जो एक स्ट्रैटेजी है जो मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें हमको बढ़ावा देख सकते हैं हम, और डेफिनेटली भारत में मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, मेरा मानना यह है कि अगले 4-5 साल में उसमें बहुत ग्रोथ आएगी। लेकिन इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इसके ऊपर अभी काफी नेगेटिव असर रहेगा जो यूरोप में वॉर चल रही है उसका। Well, we're heading for a short commercial break. We'll come back with more on Market Mantra. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। Welcome back to Market Mantra. We were discussing about market performance up until yesterday with our market expert Puneet Jain. Puneet, we were discussing about global inflation caused by the Russia-Ukraine crisis. My question is on the currency side and Russia's economic woes right now regarding their bond repayments. Have they made it in US dollars? Is there an issue with their freezing of their assets overseas, especially the central banking operations?
So Arjun, Russia at the start of this war had about $600 billion in foreign exchange reserves, which was considered very, very, very sufficient and very large. And I think it kind of gave them confidence to go to war. However, because of economic sanctions by USA, almost 50% of these reserves are now frozen, and they cannot access these reserves, which has led to a shortage of foreign exchange for Russia. On top of it, they also are spending a lot of money on this war, and therefore they are under tremendous pressure. And we have seen Russia defer bond payments which are in dollar denomination. So clearly there is a risk of Russia defaulting on dollar bonds. Local currency bonds, of course, are not affected because they can always print more rubles. And ruble has, in the meantime, depreciated hugely. It is now about 120 to the dollar against 70, 80 to the dollar just a few weeks back. So clearly 40-50% fall in ruble has hurt their prospects, the ability to earn foreign exchange. And therefore Russia's economic condition, I think, is quite depleted right now. It's quite fragile. And we are all worried that if Russia defaults on the bonds, on international bonds, then what will be the domino effect on other financial institutions? But Russia is not a big participant in the world economy, fortunately. And therefore, to some extent, I think those effects will be contained. What about India's bilateral relationship with Russia and a potential oil deal? So technically, India can go ahead with Russia for oil deals because there are reports that India has got a very attractive offer from Russia for selling oil at a huge discount. And the payments can be to some extent made through the rupee-ruble trade route, which we had used in 60s and 70s. However, I think there are other concerns because if India trades with Russia, we will definitely face a lot of resistance in the international quarters from other countries. They may not look kindly upon it. And I think it will not be right for India to go to save a few $1 billion. We are at loggerheads with the rest of the world. So I think it's a big political decision that the government will have to take. Of course, the economic costs are quite substantial for India. पुरी जी, यदि हम एक बार फिर से भारतीय शेयर बाजार की ओर लौटें और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहें, एक बार कह लें कि वर्ष 2020-21 के दौरान और फिर 21-22 के दौरान और अब जो आने वाला कह लें कि एक वर्ष होगा उसके दौरान पूरे कोविड काल में प्री कोविड और कोविड के बाद की जो स्थितियां, नए भू राजनीतिक तनाव, उसमें भारतीय पूंजी बाजार का, शेयर बाजार का कौन सा सेक्टर आने वाले एक वर्ष में आपको दिख रहा है जहां पर संभावनाएं अपेक्षाकृत अन्य की तुलना में एक के बजाय 3 सेक्टर कह लें जिनके आसार अधिक दिख रहे हैं बेहतर प्रदर्शन करने के? तो मनोज जी, एक बात तो साफ है कि जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन या इकोनॉमिक कंडीशंस पूरे विश्व में चल रही हैं, उसका सीधा पॉजिटिव असर जो पड़ रहा है वो कमोडिटीज मार्केट के ऊपर पड़ रहा है. तो हम देख रहे हैं कि सभी कमोडिटीज, यानी चाहे पेपर हो, चाहे स्टील हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, सभी के दाम काफी, और क्रूड ऑयल हो, सभी के दाम बहुत बढ़ते जा रहे हैं. और जो ये कंपनियां ये चीज सामान बनाती हैं उनको उसका बहुत फायदा होगा. तो क्लियरली कमोडिटी कंपनीज मुझे लगता है आने वाले एक साल में उनके प्रॉफिट्स बहुत बढ़ेंगे और उनके शेयर का भी प्राइसेस का भी मजबूती रहेगी. दूसरा, जो भारत के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं जो सेक्टर अच्छा करेगा वो शायद टेक्नोलॉजी सेक्टर, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर इन्फ्लेशन का और इंटरेस्ट रेट का असर कम पड़ता है. तो क्लियरली, और भारत का काफी अच्छा अब पार्टिसिपेशन है. $350 बिलियन के सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हम करते हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट हम करते हैं, तो काफी बड़ा वो क्षेत्र है. और मुझे लगता है आने वाले टाइम में वो आईटी सेक्टर में भी प्रदर्शन अच्छा रहेगा. तीसरा, ऐसा जो हमारे सामने डेटा आ रहा है वो दिखा रहा है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है वहां पर डिमांड बहुत बड़ी है और वो अच्छा सेक्टर है क्योंकि वहां पर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होती है भारत में. तो मुझे लगता है कि ये 3 क्षेत्र जो है इसमें हम पोस्ट कोविड रिकवरी भी और जो उसका कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन है उन सब चीजों को देखते हुए ये फायदेमंद रहेंगे शायद. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज कुल मिलाकर लिवाली तेज रही है. चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स आज 1.1% लाभ में रहा. जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 0.7% की वृद्धि हुई. दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग आधी फीसदी बढ़त में रहा. सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.2% की तेजी आई. उधर बिकवाली के दबाव में हांगकांग का हेंगसेंग 0.5% लुढ़क गया.
यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में ध्यान दें तो समाचार तैयार की जाने तक नरमी चल रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.6% नीचे चल रहा था। जर्मनी का डैक्स लगभग 1.5% घाटे के साथ कारोबार कर रहा था, जबकि फ्रांस के CAC 40 में 1.3% की नरमी देखी जा रही थी। Moving on to the US stock market, the three major US stock indices advanced more than 1% as investors considered the Federal Reserve's path for interest rate hikes and worries eased about the prospects of a Russian default after creditors received payments. The Dow Jones and the S&P 500 indices gained 1.2% each and the Nasdaq Composite Index climbed 1.3%. Puneet, it appears that the Russian default has been averted, but it may take place in the future. That's one. And secondly, what are the inflation worries right now in the U.S. economy? And is the tech sector the right sector for their investors to invest in the equity market? So as far as inflation is concerned, Arjun, in USA, they now have a 4 decades highest inflation rate, more than 8%. So clearly, inflation is a very big challenge for the U.S. economy, and they are used to inflation at 0.5%, maximum 1%. They haven't heard of 8% inflation, at least in the last generation. So clearly, inflation continues to be a big challenge, and U.S. Fed will have to lead a huge campaign to control inflation, and which will hurt asset prices to a large extent. Having said that, I think we will, of course, look at technology as an enabler to reduce costs and to enable consumption. So to some extent, I would say technology is a defensive sector right now, given the price inflation in commodities. But going forward, I think so. I don't want to sound negative on all fronts, but I think there are a lot of challenges to the economy for the next couple of years, and maybe after that we will have we'll return to the trend line in terms of growth, in terms of asset price inflation. Their president has spoken about investment into infrastructure, and that would also benefit companies in India. Is that going to happen? See, they have spoken about it. In fact, President Biden had spoken a lot about spending, about infrastructure in America. See, in the present situation with commodity price inflation, that whole mathematics is going to go haywire, because the economics of spending large $1 trillion on infrastructure will lead to higher inflation. So my own sense is that right now they're not going to go for that kind of spending, and probably they will wait for prices to come down and only then start this spending spree by the US government. In other news, country's largest CNG distribution company, Indraprasth Gas Limited, IGL, and leading electric vehicle manufacturer, Kinetic Green, have launched their first battery swapping station named Energy Cafe for electric vehicles EVs in New Delhi. This is a strategic collaboration to revolutionize the electric vehicle industry in India. Under the alliance, IGL and Kinetic will roll out a deep network of battery swapping stations, starting with the Delhi region, where a range of electric three-wheelers and electric two-wheelers can avail battery swapping facility. EV owners can avail swapping batteries facility on a pay-per-use concept by paying a small amount for battery as a fuel. Vehicle recharging time is eliminated as battery swapping takes only 2 minutes, and customers need not worry about charging batteries or even buying a new one in the future. Puneet, there was a study earlier where vehicular pollution was attributed more to buses and trucks and to the three-wheelers. How do you see this battery swapping actually help in bringing down pollution levels and also allowing the operators to earn a margin? All kinds of solutions are required to popularize electric vehicles in India. And of course, charging infrastructure is a huge challenge, how it gets rolled out. Battery swapping is a very easy solution to replace the charging infrastructure shortfalls. So I think, yes, it is one of the ways to go forward. However, I think electric vehicles will really take at least 4 to 5 years to become popular in India. And battery swapping, of course, we have a whole policy now by Government of India on battery swapping. It should be very helpful. पुनीत जी, हम आपका ध्यान इसी कह लें क्षेत्र पर ले चलना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि सामान्य अध्ययनों में या सामान्य कह लें कि जो हमारी आम बातचीत होती है उसमें प्रदूषण का बड़ा कारक मान लिया जाता है डीजल को, या कह लें जो ईंधन
तेल हैं हमारे उनको, उसकी तुलना में जो बैटरी का नया चलन शुरू हो रहा है, बिजली आधारित जो बैटरी आधारित जो तकनीक आ रही है, उसकी टोटल ओनरशिप को लेकर कोई अध्ययन हुआ है कि एक बैटरी के निर्माण में, उत्पादन में उससे जो प्रदूषण होता है और उसको लगातार फिर निस्तारण में जो पूरा कैलकुलेशन होता है, उसका कोई आकलन हुआ है? और यदि हाँ, तो वह पर्यावरण के लिए और संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए किस रूप में जाता दिख रहा? तो मनोज जी, आपने बिल्कुल एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी है तो उसका कार्बन फुटप्रिंट क्या है। जो पर इसमें पर कई स्टडीज हुई है, थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है। वो कहते हैं ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस करना लगता है, एमिशन होती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन। लेकिन मैं फिर भी ये मानता हूँ कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसमें ये चैलेंजेस ओवरकम हो जाएंगे इन लॉन्ग टर्म। लेकिन फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल तो हमें कम करना ही पड़ेगा, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी और पोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से भी। पर कौन सा सोल्यूशन निकलेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा या ग्रीन हाइड्रोजन होगी उसका सोल्यूशन, वो हम आने वाले समय में हम शायद जान पाएंगे। Well, hydrogen is being seen as a very viable alternative. You said 4 to 5 years before the rollout of volumes of EV vehicles as far as transportation is concerned. Do you see any subsidies being extended by Government of India? Oh, definitely. I think that is one of the major drivers of electric vehicle sales right now. Government is encouraging in terms of reducing taxes, in terms of subsidizing infrastructure. So I think government encouragement is very important if you want to develop this nascent electric vehicle technology and industry. But I think that is quite forthcoming by this government so far. What about the competing technologies? You mentioned hydrogen and EV, which is lithium-ion based. So eventually, see, fuel cell technology, which is being talked about, basically hydrogen, and how hydrogen is itself produced. Is it green hydrogen, it is blue, or is it gray hydrogen? All those issues are there. But I think finally economics will really decide which technology gets adopted and where the infrastructure is created. I think that's why I said that maybe in next 4 to 5 years, we'll finally know where this whole thing goes. But like the CDMA and GSM technology in cellular, which was all there 20 years back, but now we have only GSM technology in cellular phones. Similarly, I guess this whole energy situation will also evolve in next 5 to 10 years. Well, let's have a look at the oil market now, also in the energy sector. Oil prices today extended gains of 0.5% in intraday trade. In the previous session, the crude prices climbed 8% as the market rebounded from several days of losses, with a renewed focus on supply shortages in the coming weeks due to sanctions on Russia. Oil benchmarks in recent weeks have undergone their most volatile period since mid-2020. In intraday trade, Brent crude was trading around $107.10 per barrel, while WTI crude prices were at $103.60 per barrel. The obvious question, crude oil prices, is it likely to go up? What about competing forces of Iran being allowed to enter into the supply market, and Russia, who are now dependent upon foreign exchange for the sale of their crude oil? So clearly, right now, the oil market is in a complete spin, because Russia, on one hand, is trying to sell its oil. We have Libya and Iran now pushing for higher production, higher sales. So my guess is that we are going to see a lot of volatility, but it will settle down. बस यहीं पर हम आपको श्रोताओं की ओर से पुनीत जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे. धन्यवाद मनोज जी. And before we close, a reminder of the headlines. Key domestic share markets rise around 4% during the holiday-shortened business week ended yesterday. Sensex reclaims the 57,800 mark. Nifty closes near 17,300 points. Asian and US stock markets extend gains, and Brent crude oil prices climb above $107 per barrel level. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra.